Everyone, welcome back to my YouTube channel, and if you're seeing my face for the first time, welcome. So today I have another Meesho short kurti haul. So this time I ordered a couple of really affordable Meesho kurtis, and I have kept them on in my wish list for a long time, and I finally decided that I'm gonna get them. So ये सब कुर्तीज़ बहुत ही शॉर्ट कुर्तीज़ है, बहुत ही अफोर्डेबल है, and they are a great option for office. Like office wear, one or two of them they are great options for just stepping out and running errands, for tuition, even for college. So yeah, I just wanted to show them to you guys and give you my feedback whether you should buy them, which ones you should avoid, whether they are good at the price point that they are priced at. So without wasting any more time, let's get inside the haul. The first kurti that I got is this kurti. I mean, can it get more summery than this? दिस वन इज़ फॉर 290 रुपीज़. ये मैंने लार्ज में लिया है, एंड दिस इज़ रेयॉन, एंड दिस इज़ अ रियली कंफर्टेबल कुर्ती. ये फ्लोरल पैटर्न, दिस वॉज देयर इन अदर कलर्स एज वेल. Only disappointment, one of the reasons I got this kurti is because of this button detailing. But the only disappointment here has been that last वाले button के लिए यहाँ पे कुछ लगाने के लिए they have not, it's not there. But ये तो आप अपने टेलर से कहीं से भी जाके लगा सकते हैं. But this kurti is actually a steal deal, I think, for 300 रुपये से भी less. एंड प्रिटी कंफर्टेबल. इट्स रेयॉन, बट ये आई थिंक मैंने बस दो तीन बार ट्राई ऑन किया है टू मेक दिस वीडियो. इसका टैग भी अभी भी है. सो आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड कुर्ती. इट्स नॉट सी थ्रू एट ऑल, एंड लाइनिंग अच्छी है, कहीं से धागे भी नहीं निकल रहे हैं. सो ओवरऑल आई थिंक इट्स प्रिटी गुड. सो आई वुड गिव दिस लाइक अ 4 on 5. द सेकेंड कुर्ती दैट आई गॉट हैज़ बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. सो मैंने ये कुर्ती लिया था 226 रुपीज़ का. ये भी रेयॉन में है. प्रिटी सामरी राइट. ये मैंने लार्ज में लिया था. बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे इफ़ यू कैन सी दैट इट हैज़ अ डिटेलिंग, ऐसा एक डिटेलिंग है यहाँ पे. बट दैट डिटेलिंग आई थॉट विल लुक गुड ऑन माई बॉडी, बट आई थिंक दैट डिटेलिंग इज़ नॉट रियली गुड फॉर अ हैवी बस्ट, because that just makes that area more prominent, and I don't think you want that. This will really look good if you have a smaller bust, you have a smaller frame. Also I think the neck भी थोड़ा ज़्यादा deep है, so this doesn't look good on my body. It's actually not flattering at all. So ये तो मैं return करने वाली हूँ. But if you are of a smaller frame, then it's a pretty good kurti. If that design works for you, it's pretty summery. It has this beautiful light pinkish and white detail. So ये काफ़ी अच्छा है. The stitching is good. It's not see through at all for that amount. 250 रुपये से भी कम में. But I would advise people with a heavier bust to avoid this one. The third kurti that I got is my favorite kurti from this haul, and मैंने इसको भी पहना भी है 2-3 बार. This is this kurti. ये मैंने बहुत दिनों से मीशो में देखा था, and I had kept it in my wish list. I finally got it. ये 230 रुपीज़ का है. Okay, I just really love this collar detailing. I love these triangles. This color बहुत ही अच्छे मटेरियल का है. ये रेयॉन का है. इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है. I'm wearing this in the sweltering heat of Kolkata, and very good stitching. Absolutely इसमें कोई भी you won't feel it's see through at all. ये बहुत ही अच्छे मटेरियल का है. And I never had a collar ऐसे वाला करके कुर्ती. So मैंने ये लार्ज में लिया है, and it's really nice. This kurti actually you can wear easily, going out for running errands. You can go out in this, even for college and tuition. ये तो बिल्कुल perfect है. So this one is a solid 5 on 5. Fourth kurti that I got is actually in black. I know summer का season है, but I really like this minimalistic design. ये सिर्फ 151 रुपीज़ का है. Can you imagine? 200 रुपये से भी कम में एक कुर्ती मिल रहा है. बट I got it because it just has two, यहाँ पे थोड़ा वो वाइट का डिटेलिंग है, नेक पे है, एंड इट्स जस्ट प्लेन. और मुझे ये कुर्ती आई लाइक इट, बट द ओनली इशू फॉर मी इज़ दैट ये थोड़ा लूज है, एंड द नेक लाइन इज़ टू डीप फॉर माई लाइकिंग. सो अगेन, इफ यू हैव अ हेवियर बस्ट, I would ask you to avoid this, because this just gives more focus on that area. But otherwise it's a pretty nice kurti. लार्ज में लिया है मैंने. अच्छा, ये मैंने एक्सेल में लिया है, मुझे ये लार्ज में लेना चाहिए था, बट इट्स वेरी सस्ता. सो या ये सी थ्रू भी नहीं है. सो pretty good. So like a 4 on 5. I'm down to the fifth kurti of the haul, the last kurti, and this kurti is very unique.
This is the beautiful color. First of all, the color is amazing. ये 273 रुपीज़ का है और मैंने ना ये लार्ज में लिया है. Look at the design. It's so beautiful. इसमें similar एक और भी other like same pattern में there were 4 other colors. Very beautiful colors वो भी थे. And I got it because this looks very different, right? ये cotton कुछ mix का they have written in the website. बहुत ही अच्छा stitching है इसमें. The only problem that has happened, probably I should have taken a size larger. ये मैंने large में लिया है actually, and it's very tight on me. So if I take XL, then I think it would have fitted me perfectly. But other than that, it's a beautiful design, beautiful kurti. I absolutely love this design. Just close up में if you can see this, such a beautiful design. ये लगेगा भी नहीं कि ये 300 रुपये से कम वाली कुर्ती है. It has that high end feel. So I would definitely recommend you to get this one. But yeah, size up. So this one is definitely like a 4.5 on 5. This was my Meesho short kurti haul. I'm gonna put all the product codes in the description. So if you like any of them, you just copy paste the product code and you get it on Meesho. So if you did like this video, do like, share and subscribe to my YouTube channel so that I can bring out more such content, and I'll see you guys soon. Bye.